Hello everyone, and a very good morning to all of you, and welcome to BYJU'S Exam Prep, the most comprehensive preparation app for all exams. So if I'm audible and visible, just write in the comments, yes sir, you're audible, so that we can start a session. So I hope you are aware. We'll be running the Hindu analysis class from Monday to Thursday, 11 a.m. in the morning. And today is 3rd January, and we are here with the Hindu analysis of 3rd January. So if I'm audible, just write in the comments, yes sir, you're audible. Okay, so let's start. तो आज की जो first page की the Hindu article थी, the first one was talking about jet burst into flames after collision with a relief plane in Tokyo, 5 dead. So this was actually an unfortunate news coming in from Japan. Tokyo, actually the capital of Japan. We will be discussing about this in detail because we have seen recently a Japan earthquake. I mean, Japan is actually very famous for earthquakes because it is actually at the boundary of the plates. I mean, it's the place where actually the plate boundaries merge, and that is why we have seen a lot of earthquakes in Japan in the past as well. But this time it was a very severe earthquake, somewhere around 7.5 around Richter scale, and we'll be discussing about this as well. The next is MHA. MHA means Ministry of Home Affairs. Ministry of Home Affairs means Home Ministry, जिसको हम लोग हिंदी में गृह मंत्रालय कहते हैं. Seeks to pacify truckers protesting new hit and run law. So I hope you are aware that in the entire India, the truck drivers are actually protesting against the new hit and run law. So we will be discussing about this as well. Okay, so let's start. Yes. Okay, Alia Kausar, please update your app. There might be some issues in that. If you are not able to, you can say watch it again. Then please uninstall the app and install it again. है ना? Okay, so let's start with this one. सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ. Here is India, this is China, this one is actually Japan. Actually ये पूरा जापान है. Okay, so जापान में यहाँ पर एक जगह है, I mean Tokyo, the capital of Japan. Okay, where actually this unfortunate incident happened. 5 people aboard a Japan Coast Guard aircraft died on a Tuesday when it hit a Japan Airlines. तो एक छोटी प्लेन थी कोस्ट गार्ड एयरक्राफ्ट जिसने एक बड़ी प्लेन को टक्कर कर दी. And the people, actually the passengers who were sitting in the big plane, I mean the 379 passengers, they were safe. But however, in the smaller plane, 5 members out of the 6 total, so total 6 members were there and 5 of them died and all. So that was an unfortunate incident. Bound for central Japan after Monday's huge earthquake. अब देखो आपको ये समझना क्या है इसके बैकग्राउंड में. That you have to understand it. देखो actually क्या हुआ था, 1 or 2 days back we have seen this news that Japan earthquake toll rises to 62, rescuers battle after shocks, poor weather and all. Okay, now what happened was the toll rise due to series of powerful earthquakes and all. देखो मैं पहले बता देता हूँ. This is Japan. Okay, यहाँ पे एक जगह है इशिकावा. Okay, यहाँ पर somewhere around 7.5 Richter scale का earthquake आया. Okay. नाउ इसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन टोक्यो से जा रहा था. वही जो प्लेन थी, छोटी वाली प्लेन, दैट स्मॉल कोस्ट गार्ड शिप विच कोस्ट गार्ड प्लेन विच एक्चुअली हिट द लार्जर प्लेन. शायद परहैप्स ये पैनिक में हुआ मे बी बिकॉज पीपल वेर इन अ हरी, है ना, तो लोग जल्दी में जा रहे होंगे हरी में कि टू हेल्प सेव द लाइव्स एंड ऑल, एंड मे बी समथिंग बिकॉज ऑफ दीज रीजंस दिस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हैपेंड. सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग इट. नाउ एक चीज और याद रखिएगा कि when an earthquake happens and if there is a water body nearby it, there is a probability of tsunami coming. ठीक है, तो एक और चीज की जो बात हो रही थी वो ये हो रही थी कि शायद सुनामी भी आ सकता है. Now what is tsunami? Tsunami actually is actually from a Japanese word and it means harbor waves. Tsunami का जो मतलब होता है harbor waves. Okay, तो यहाँ पे लिखा होगा somewhere, है ना, it means harbor wave. Now what happens was is actually क्या होता है जब वाटर बॉडी होती है, जैसे मान लीजिए वाटर बॉडी यहाँ पे कहीं पे मान लीजिए earthquake है जैसे यहाँ पे. ओके, सो नाउ व्हाट विल हैपन इज कि अंदर इसके वेव जनरेट होगा और ये जब बाउंड्री पे हिट करेगी यानी हार्बर यानी कि समुद्री तट पर हिट करेगी तो वो बहुत डिस्ट्रॉय करती है, डिस्ट्रक्शन लाती है. सो सुनामी वेव्स एक्चुअली स्टार्ट्स इन द मिडल ऑफ द वाटर समवेयर, but when it comes near to the harbor or near to the coast it causes heavy damage, and that's actually the word tsunami comes. Tsunami is a Japanese word which means harbor waves.
So since earthquake have happened, and whenever earthquake happen inside the water, there is a probability that tsunami might start. Okay, so people have generated these there have been some actually fear that tsunami might come and it might hit maybe the Japan or some other places as well. Okay, now since we are talking about tsunami, one thing which should be crystal clear is that there was a tsunami which actually happened in 2004, which hit even the Indian Ocean and the Indian coast as well. And that is why whenever we talk about tsunami, this tsunami becomes very, very important. This is 26th December 2004. I mean, the next day after the Christmas, this actually came, and it actually started from the Sumatra, Indonesia region. So let me show you. This is Sumatra of Indonesia. So somewhere here, actually, the tsunami started. It hit the Andaman and Nicobar Islands, the Sri Lanka, the India. And so this region of India got affected a lot in 2004 because of tsunami. And this was actually a very famous tsunami and all. It was very much in the news. So that is what you should be knowing about it. है ना, तो यहाँ पे आया था सुमात्रा के आसपास, and it hit the eastern coast of India, the Tamil Nadu coast, right? Sri Lanka, Andaman and Nicobar Island, these islands actually got affected. And after this, after 2004 tsunami, Indian government passed, or the Indian Parliament passed, a Disaster Management Act 2005. ठीक है, तो हुआ क्या कि जब ये सुनामी आए 2004 में दिसंबर में, उसके बाद एक साल बाद डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया, द सेपरेट एक्ट वाज मेड, एंड अंडर विच NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वाज सेट अप, एंड दिस इज अ स्पेशल अथॉरिटी सेट अप to actually fight the disaster and all, or actually to cater to the demand of disaster management and all. Okay, and the chairperson of NDMA is the Prime Minister himself. ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए. Just have a basic idea about it. Okay, first page में another article was there which we were talking about. MHA seeks to pacify. MHA मतलब Ministry of Home Affairs. Ministry of Home Affairs, or you can say Home Ministry, seeks to pacify. Pacify का मतलब क्या होता है? Convince करना, ठंडा करना लोगों को कि है ना, to convince, है ना, to cajole person, है ना, मनाना, जिसको हम लोग हिंदी में कहेंगे. Truckers protesting new hit and run law. Now what is this and why actually the truck drivers, truckers मतलब होता है truck drivers, है ना, why are the truck drivers protesting and all against this law? तो actually क्या है, आपको शायद पता होगा, अभी एक ये 3 लॉ लाया गया है ना, भारतीय न्याय संहिता BNS, which will replace Indian Penal Code. Then another one is Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita BNSS, which will replace CRPC. And the third one is Bharatiya Sakshya Sanhita, which will replace Indian Evidence Act. Okay? ठीक है, ये सब आपको पता होगा, BC की बात हो रही थी. ठीक है. Now what happened was कि under this there is a provision, है ना, इस provision में ये है कि under section 106 of BNS, वही भारतीय न्याय संहिता, which is replacing IPC, है ना, which prescribes maximum punishment of 10 years in case of rash driving and negligent driving. इन्हें 10 साल तक सजा हो सकती है. The government wants to clarify that the new laws have not been implemented yet. We would also like to point out that the decision to invoke section 106 will be taken only after consultation with All India Motor Transport Congress. अब देखो इसमें क्या है कि भाई तो 10 साल सजा होगी तो क्या गलत है? देखो होता क्या है, एक्चुअली समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि कई बार जो देखो ट्रक चलाने इज वेरी टफ जॉब. ठीक है, driving a truck or a bus is a very difficult job. It's not like driving a car or riding a motorcycle. Okay, what happens is sometimes there is no mistake of truck driver or bus driver, and a person, the driver hits someone and the person dies and all. In that case, there are a lot of cases where a driver has to run away. बहुत बार ऐसा होता है कि ट्रक ड्राइवर चला रहा है, एक बार कोई आदमी अगर उसको लग गया, उसकी शायद ड्राइवर की गलती भी ना हो, तो कई बार क्या होता है कि ट्रक ड्राइवर को जान से मार दिया जाता है या पीटा जाता है, तो उसको रन अवे भागना पड़ता है. So there are many cases actually, perhaps that is what they are protesting, many cases where actually there is no mistake of the truck driver, and the truck driver might get jail up to 10 years and all. So or actually truck drivers are not from very financially rich background and all. So that is why perhaps they were protesting कि नहीं बहुत ज़्यादा है, इतना लंबा सजा होना सही नहीं है and all. That is what they were protesting in it. ठीक है, so you got it. So then they have their own union. जैसे सबका union होता है ना, the auto union, drivers union, truck driver union. So there is a truck driver union called as All India Motor Transport Congress. They have met and talked with Ajay Bhalla. Mr. Ajay Bhalla is the Home Secretary of India in this regard and all. ठीक है, so just have an idea about that. You got it? आप समझ गए? So
फिर एक और आर्टिकल थी, रोल आउट शेड्यूल ऑफ 3 न्यू क्रिमिनल लॉज। मैंने बताया था 3 न्यू क्रिमिनल लॉज आर BNS, BNSS and BSS, right? So BNS is replacing IPC, BNSS is replacing CRPC, and BSS is replacing Indian Evidence Act. Okay? Yes. Now, so what happened was the official added that it will take 9 months to a year for the 3 criminal laws to be implemented across the country. तो officials का ये रहा है कि जो तीनों लॉ है तो पास किया गया है, इसमें 3 से लगभग 9 महीना तक लग सकता है. It will take 9 months to implement it. इसलिए कि उसको implement करने में थोड़ा टाइम लगेगा ना. You need to give training to the police officers concerned, है ना. Even the lawyers and the judges are supposed to update themselves, है ना, according to the new law and all. So it will take some time. A task force has been constituted under Bureau of Police Research and Development to oversee the training. तो अब क्या है कि पुलिस वालों को भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि न्यू लॉज आए तो आपको कैसे रजिस्टर करना है FIR, ठीक है. Even the judges and the lawyers, the judges are also supposed to read the new laws. Even the lawyers are supposed to read the new laws, ठीक है. तो जजेस, लॉयर्स एंड पुलिसमैन, इन तीनों को ये लॉ, ये सब चीजें अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, ठीक है. सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग अबाउट इट. एक और फर्स्ट पेज में आर्टिकल था टॉकिंग अबाउट फ्री मूवमेंट रिजीम एट म्यांमार बॉर्डर टू एंड सून, एंट्री इनटू इंडिया विल नीड वीजा. अब देखो ये क्या है, एक्चुअली 2016 में काफी फेमस हुआ था दैट द गवर्नमेंट हैज साइंड अ पैक्ट विद म्यांमार कि इस रीजन में फ्री मूवमेंट रिजीम. तो फ्री मूवमेंट रिजीम एक्चुअली अलाउज विदाउट वीजा to travel 16 किलोमीटर on both the sides of the border. ठीक है. तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल बताता हूँ, जैसे यहाँ पे म्यांमार है, यहाँ पे मिजोरम है. ओके. नाउ द ट्राइबल कम्युनिटी लिविंग इन दिस रीजन एंड दिस रीजन आर सेम, ठीक है. भले वो इंटरनेशनल बॉर्डर बना हुआ हो, लेकिन जो लोग हैं यानी जो ट्राइब है वो सेम टाइप के लोग हैं, सेम रिलीजियस, आई मीन सेम ट्राइब एंड ऑल. सो दे हैव एक्चुअली रिलेशन ऑन क्रॉस द बॉर्डर, ठीक है. तो उनकी रिश्तेदारी वगैरह होती है. इसीलिए अलाउ कर दिया गया था कि 16 किलोमीटर के रीजन में, इस रीजन में आप इधर से इधर यू कैन मूव विदाउट वीजा, समथिंग लाइक दैट. सो दैट वाज कॉल्ड एज फ्री मूवमेंट रिजीम. So it was allowed. The government did a pact in 2016 around, ठीक है. But now what happened was, I hope you are aware, on 1st February 2021 a military coup happened in Myanmar. आपको पता है कि 2021 में मिलिट्री coup आ गया था. उसके बाद क्या हुआ, there are a lot of cases where we have seen actually that the people from Myanmar actually moving towards these regions in Manipur and Mizoram regions. Why they are getting benefit from this, है ना, escaping Janta is actually the military of Myanmar. More Myanmar refugees cross over into the Mizoram. तो क्या कर रहे थे कि चूंकि वहां पे मिलिट्री रूल आ गया था तो वहां से लोग भाग के आने लगे थे वही फ्री मूवमेंट रेजिम का फायदा उठाकर. But no, the issue is actually it will cause, if too many people will come, of course it will create a problem in this country, in this region, in Manipur, Mizoram and all. अगर बहुत सारे लोग वहां के यहाँ आना शुरू हो जाए, बसने लगे, तो फिर यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी ना, रिसोर्स इश्यूज एंड ऑल, बिकॉज देयर विल बी शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है. तो ये सब मसला हो जाएगा. तो फिर द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड दैट वी विल एंड इट एंड नाउ वी विल एक्चुअली रेगुलेट इट विद वीजा. अब क्या है कि इसको खत्म कर दिया जाएगा, तो वीजा लेके आपको आना पड़ेगा, अदरवाइज आप नहीं आ सकते हो, ठीक है. And as it was last revised in 2016, the official said that around 200-300 kilometer border will be fenced and all. तो fencing of border will also be done. तो है ना, तो ये वाला जो है ना लगभग 300 किलोमीटर का होगा. So fencing का मतलब होता है बॉर्डर लगाना, ठीक है. यानी उसमें पूरा fencing कर दिया जाएगा और यहाँ पे military personnel will be standing and all. And now you cannot move from here and there and all. ठीक है. Without visa, you need a proper visa and all. Then only you can move from here to here and here to here. ठीक है. So that is what you should be knowing about. Amid apprehension that states such as Nagaland, Mizoram may oppose the border move, border security centers domain and all. खैर, तो ये बताया जा रहा है कि this is of course the center's domain. मतलब this is not, I mean it is the job of the central government to ensure the protection of borders and all, है ना. तो ये central government का of course ये decision है. Okay, is it clear? And if you are able to understand it, please press the like button guys and subscribe to our channel as well. सबको like button press करते जाना. Okay, है ना. So just before moving on guys, this is a CLAT success kit now available and all. This is for 2025 course. If you are planning for next year, you can go for this course. Call on this number 95388 95678 पे call कर सकते हो. Okay, let's move on to the editorials. तो यहाँ पे editorial है global nuclear order is under stream. This is an article written by former IFS officer Mr. Rakesh Sood. Now what is that? Let's discuss. ठीक है. देखो he has written about global nuclear order क्या होता है, पहले ये हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हिस्ट्री पे चलते हैं. So let's learn the history of this the history of nuclear weapons, है ना, and the nuclear the probability of nuclear wars in the past.
उस पर पहले हम लोग चलते हैं। जैसे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस इज वेरी फेमस, विच एक्चुअली द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट। देखो होता क्या है कि 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था। ये क्या हुआ था? सी व्हाट हैपेंड वाज, आई होप यू आर अवेयर, 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर 1991 तक वी हैड सीन कोल्ड वॉर, राइट? ये तो आपको पता होगा, बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। ओके, आई होप यू आर अवेयर। सो हियर इज यूएसए, हियर इज यूएसएसआर, ठीक है। Now what happened was कि USA was actually led by the capitalist world and USSR was led by communist world, ठीक है, yeah, capitalist world थी। So what happened was actually ऐसा कहा जाता है, so the historians say that the USA had installed a nuclear weapon in Italy and Turkey। USA ने इटली और टर्की में न्यूक्लियर वेपन इंस्टॉल कर दिया गया था। So what happened was USSR decided to install a nuclear weapon in Cuba because Cuba was a communist country, so it was of course supporting the USSR, ठीक है, ये भी एक कम्युनिस्ट कंट्री था उस टाइम पर। तो 1962 में इसीलिए क्यूबा में मिसाइल लगा दिए, न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर। अब क्या होगा, क्यूबा से यूएसए बहुत नजदीक है, आप देखो तो इट्स वेरी नियर। ओके, सो नाउ देयर वाज अ फियर that if the USSR will use nuclear weapon, of course it will affect the, I mean it will attack the USA and और इसे टर्की और इटली से USSR नजदीक था, ठीक है। So it is said कि जब ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ 1962 में, so the historians say that it was, I mean we were at the verge of nuclear war. The world was on the verge of nuclear war, यानी कि जो दुनिया थी वो न्यूक्लियर वॉर के एकदम टिप पर थी, एज पर खड़ी थी, ठीक है। when the two came perilously close to launching a nuclear war and all, है ना, तो इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। First as the two nuclear superpowers they needed bilateral mechanism and all, है ना, तो अब इसी की बात कर रहे हैं। देखो just go and read about it, we have discussed it in short। So the global nuclear order was created in the shadow of cold war and all, है ना। तो ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर का मतलब हुआ कि बोथ द कंट्रीज केम टुगेदर, ठीक है, कि कुछ बातचीत किया जाए। तो क्या पहला बात हुआ, द फर्स्ट वाज एज द टू न्यूक्लियर सुपर पावर दे नीडेड बायलैटरल मैकेनिज्म टू प्रिवेंट टेंशंस एंड ऑल। Bilateral mechanism मतलब between the two nations they decided to have some sort of treaty or agreement where both the nations should not be using any sort of nuclear weapon, and that is what the author is calling it as global nuclear order। तो पहला ये केस बताए। The second that is what he's talking about, है ना। So the first bilateral measure was the hotline established in 1963। Now hotline एक तरह का talks होता है, समझ लो, ठीक है। So there was a talk that established between USA and USSR in 1963, okay। Then the second one is very famous, that's called as Nuclear Non-Proliferation Treaty that actually happened in 1968, very famous। इसको कहते हैं Treaty of Non-Proliferation of Nuclear Treaty, NPT भी कहते हैं, 1968 is a very famous treaty where actually ठीक है, इसमें ये हुआ ये था कि it recognized nuclear weapon states। तो 5 states को 5 countries were considered as nuclear weapon states। वो कौन से 5 है? The same P5 nations, जो P5 nations है उसी को nuclear weapon states लोगों ने define किया है ना। And these 5 were actually nuclear weapon states and all. Opened for signature, it began modestly with less than 60 parties, but today it is widely described as the cornerstone of the global nuclear order with 191 adherents. Okay, that is what you should be knowing about it. Now the third element of the global nuclear order came into existence in 1975 and all, ठीक है। तो जो थर्ड हुआ उसमें ये तो हो गया न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इसमें न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स रिकॉग्नाइज किया गया और नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, ठीक है। तो 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, वही जो P5 नेशंस है वही, ठीक है, एंड नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स करके डिफाइन किया गया। अब इसमें इतना डिटेल नहीं जाना आपको, बट जस्ट हैव एन आइडिया दैट न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी वाज साइंड इन 1968, ओके। Now the next one is the third element of global nuclear order came into existence in 1975, that's called as nuclear supplier group। देखो हुआ ये था कि 1974 में इंडिया टेस्टेड न्यूक्लियर वेपन, ठीक है, ड्यूरिंग इंदिरा गांधी टाइम, एंड जस्ट आफ्टर इट इन 1975 न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप वाज फॉर्म्ड, ठीक है। एंड दिस सप्लायर ग्रुप, देखो उसमें लिखा हुआ भी, इट वाज फॉर्म्ड इन रिस्पांस टू द इंडियाज न्यूक्लियर टेस्ट, ओके। सो इसको कहते हैं न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। सो ऑलमोस्ट आई थिंक 57-58 कंट्रीज है, आप एग्जैक्ट नंबर्स चेक कर लेना। एंड दे फॉर्म्ड दैट कि वी शुड बी डूइंग, व्हेनेवर वी आर डूइंग द बिजनेस, वी शुड बी डूइंग बिजनेस विद इन द among these states only, ठीक है, who are member of NSG, ठीक है। So to prevent proliferation of nuclear weapon, ताकि न्यूक्लियर वेपन और सारे हर कंट्री के पास ना पहुंच जाए, इसको रोकने के लिए ये न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप बनाया गया है, राइट। सो जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस की फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट ऑफ इंडिया इन 1974, इसका ऑपरेशन का नाम बताना है। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन इन विच इंडिया मेड द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन 1974?
Operation X, Operation Smiling Buddha, Operation Polo, Operation Shakti. What is the right answer to this question? First nuclear test in the year 1974. बताइए. What is the name of operation in which India made first nuclear test in year 1974? Yes, Operation Smiling Buddha. Very good. Alia Kausar, Safi, Nomani, all right. B is the right answer. इसी को पोखरान 1 भी कहते हैं. ठीक है. ठीक है. B is the right answer. ठीक है. Yes. And so though the Soviet Union and India enjoyed close relationship, having signed Indo-Soviet Treaty in 1971, the USSR was committed of holding GNO and all. ठीक है. तो एक ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर वही सब हो गया. न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप हो गया. ठीक है. Then a nuclear proliferation treaty 1968 हो गया. So these were some of the things है ना that they are talking about. ठीक है. तो इसमें अपना डिटेल नहीं देना. 1995 में NPT ओरिजिनली कंक्लूडेड 25 years है ना. 1968 से 25 साल जोड़ दोगे है ना. So these are the things they are talking about. अब इतना डिटेल नहीं जाना. एक और कॉन्सेप्ट है, कुछ कॉन्सेप्ट जैसे न्यूक्लियर डेटरेंस का कॉन्सेप्ट होता है. Now what is this? So this is a concept which believes that if the two nations are having the nuclear weapon, both will not fight a war. जैसे मान लो एक कंट्री A है और एक कंट्री बी है, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है. ठीक है. तो ऐसा ये थ्योरी कहा जाता है न्यूक्लियर डेटरेंसी की दोनों कंट्री फाइट नहीं करेगी वॉर. व्हाई? दे विल नॉट फाइट द वॉर बिकॉज अगर ए ने बी पर मान लीजिए अटैक किया है तो हो सकता है ये कोई भी एक न्यूक्लियर वेपन चला देगा, दूसरा भी चला देगा. सो इसको एक और कहते हैं मैड म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन. सो इफ बोथ द नेशन लेट्स से ए एंड बी बोथ हैव न्यूक्लियर वेपन एंड ए ड्रॉप्स अ न्यूक्लियर वेपन एट बी, सो बी विल ड्रॉप अ न्यूक्लियर वेपन. तो क्या हो जाएगा? अगर एक दूसरे को दोनों को मारे खत्म कर देगा. तो ऐसा कहा जाता है कि इफ द टू नेशंस आर हैविंग न्यूक्लियर वेपन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ द वॉर इज वेरी लेस. ये एक थ्योरी है. ठीक है. उसमें इतना डिटेल नहीं जाना, बट दीज आर सम ऑफ द थ्योरीज, रियलिस्ट थ्योरीज एंड ऑल. ठीक है. टुडेज न्यूक्लियर वर्ल्ड इज नो लॉन्गर अ बाइपोलर वर्ल्ड. एंड देखो बाइपोलर मतलब क्या, जिसमें टू पोल्स हो. जैसे ड्यूरिंग कोल्ड वॉर वी हैड टू पोल्स, यूएस एंड यूएसएसआर. बट इट इज सेड दैट टुडे द वर्ल्ड इज नॉट बाइपोलर, रादर today the world is not bipolar, rather multipolar. Okay. Now what do you mean by multipolar? Means there are multiple polarity. ठीक है. bipolar नहीं यानी कि multiple superpowers. So there can be US, even India, the China, the Russia. ठीक है. there can be other countries as well. ठीक है. इसीलिए multipolar world आज के दौर में कहा जाता है. This rivalry is different from the Cold War because both the economies are closely intertwined and further, and China is an economic and technological peer rival. ठीक है. So these are the things the author is talking about. फिर अब न्यू स्टार्ट ट्रीटी वगैरह की बात हो रही. इतना डिटेल आपको नहीं जाना है. ठीक है. आई थिंक दे विल नॉट बी आस्किंग इट. एक और ट्रीटी जिसको आप पढ़ लीजिएगा, कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी 1996. प्लीज रीड इट आफ्टर द क्लास इज ओवर. ठीक है. सो दीज आर वेरी फेमस एक्चुअली न्यूक्लियर ट्रीटीज एंड ऑल. ठीक है. दे आर टॉकिंग अबाउट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. साइड में एक आर्टिकल थी, फॉल्टी कंपल्शन इश्यूज विद आधार सीडिंग आर हेडेक फॉर मनरेगास बेनिफिशियरीज एंड ऑल. देखो आप मनरेगा जानते हो कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, राइट? एंड दिस प्रोवाइड्स एक्चुअली 100 day ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू रूरल पीपल. 100 day एम्प्लॉयमेंट टू रूरल पीपल एंड ऑल, राइट? नाउ व्हाट हैपेंड वाज कि इसमें एक ऑर्डर आया था, मतलब द गवर्नमेंट एक्चुअली सेड कि आधार को आपको, जैसे आधार से बहुत सी चीज को कनेक्ट किया गया ना, जैसे बैंक अकाउंट को, पैन को, है ना. सिमिलरली मनरेगा वर्कर्स एक्चुअली उनका जो कार्ड है, देयर जॉब कार्ड्स वेर एक्चुअली सीडेड मतलब होता है मर्ज और कैन से लिंक्ड विद द आधार एंड ऑल. और लास्ट डेट था 31 दिसंबर का, उसका टाइम बढ़ाया नहीं गया. ओके. So just have an idea about it. Alarmingly, the decision would now affect nearly 35% of job card holders for this mode of payment and all. So the author is saying it might affect the people because perhaps a lot of people might not have actually linked it and all. ABPS होता है आधार enabled payment system, है ना. तो ये सब चीज the author is talking about. ठीक है. इसमें बहुत सारे positives भी हैं, ऐसे बहुत सारे negatives issues भी हैं and all. अब इतना डिटेल नहीं जाना है कि what are the issues and all. ठीक है. About it. The Ministry of Rural Development has said it may consider exemption from APPS on a case-to-case basis from Gram Panchayat if there are technical issues. अगर कुछ technical issues हो तो शायद हो सकता है कहीं कहीं पर exemption दे दिया जाए. That is what it is being talked about. है ना. इसको पढ़ लीजिएगा आप. Actually क्यों? Because after 2005 right to work का concept लाया गया, legal right to work. ठीक है, अंदर मनरेगा. ठीक है. Just have an idea about it. है ना. Now, नीचे में एक आर्टिकल थी talking about an India out plan that could impact the Maldives. Okay. Now,
अब आपको पता होगा, देखो फर्स्ट लेट मी शो, हियर इज इंडिया, दिस इज श्रीलंका, देयर इज अ कंट्री, यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है, दैट्स कॉल्ड एज मालदीव्स एंड द कैपिटल इज माले, ठीक है। अब लास्ट ईयर द इलेक्शंस हैपेंड, आई थिंक रिसेंटली 2-3 months बैक, एंड मोहम्मद मुइजू एक्चुअली बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स। देखो 17 नवंबर को नए प्रेसिडेंट बने, but actually it is said that he has organized India out campaigns in the past. Okay, why the Maldives president requested India to withdraw its troops from island? So actually क्या, इससे पहले जो president थे, before him the president was slightly pro-Indian, and this person is actually not very, it is said, the scholar says, the authors, the edit page writer says that he is not very pro-Indian, he perhaps will be more close to China and all, ठीक है। So these are the things being talked about. So the new president has requested India to withdraw its troops from Maldives. So this was in the news and all. ठीक है, तो इसी की बात हो रही है। The recent decision by Maldives to revoke an agreement. Revoke मतलब cancel करना. To cancel an agreement with India for joint hydrographic surveys in Maldivian waters has caused considerable dismal in Indian media and strategic circles. Dismal मतलब होता है कि मायूसी होना है ना. So sort of sorrow that yes, the Maldives government has cancelled an agreement and all. Okay, the move by Male, Male is the capital of Maldives, in mid-December came a few weeks after the archipelagic state formally asked New Delhi to withdraw its Indian military presence, है ना। ये बात तब हुआ कुछ दिन बाद इसके कि इंडिया उन्होंने कहा कि विड्रॉ कर लीजिए मिलिट्री को, है ना। तो ये नवंबर में न्यूज में था। So this was in the news in November that the new president asked the Indian government to withdraw the military troops, and next month, that is in mid-December, they decided to cancel an agreement with India as well regarding hydrographic surveys and all. Okay, इसका मतलब है कि it appears that the new president actually is not very favorable to India perhaps. Okay, so that is what they are talking about. What is behind the India out campaign in the Maldives and all? तो ये सब थोड़ा सा आप पढ़िएगा, हाँ। That is what you should be knowing it. And since the election of Mohammad Muizzu in November 2023, there has been a deliberate, if predictable, attempt by Mali to create a distance with New Delhi. And तो वही बता रहे हैं कि जब नए प्रेसिडेंट आए उसके बाद से थोड़ा सा दूरी बढ़ गई है ना। लो एब का मतलब क्या होता है, नीचे चला गया, रिलेशन इज गोइंग डाउन, दैट्स कॉल्ड एज लो एब, है ना। The Maldives would like the world to believe that terminating the hydrographic pact is a way of asserting its autonomy, and since it is not, far from balancing its ties, Mali has thrown its political lot with China. तो ये बिलीव करना कि वो इसलिए कर रहे हैं कि वो अपना सॉवरेन ऑटोनॉमी असर्ट कर रहे हैं, ये शायद सही नहीं है, बिकॉज दे आर मूविंग अवे फ्रॉम इंडिया गोइंग टुवर्ड्स चाइना परहैप्स। ऐसा लग रहा है कि वो चाइना की तरफ जाने का सोच रहे हैं इंडिया से विड्रॉ करके। दीज आर द थिंग्स बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर। इट इज वर्थ नोटिंग दैट हाइड्रोग्राफिक data inherently has a dual nature in that information collected from the seas can be used for civilian military purpose। हाँ, हाइड्रोग्राफिक डेटा का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे जो वाटर है ना, तो यहाँ पे जो वाटर इससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट किया जाता है ना, विच कैन बी यूज फॉर सिविलियन पर्पस, शिप्स जाने के लिए, है ना, और मिलिट्री यूज के लिए भी, कि मिलिट्री शिप्स जाने के लिए अच्छा कहां पर पानी कैसा, देखो पानी का भी डेटा कलेक्ट किया जाता है वाटर रिलेटेड, अच्छा कहां पर कितनी डेंसिटी, कहां पर शिप कहां से कैसे जा सकती है, हाउ इजिली अ शिप कैन गो, what should be the weight of the ship that should go in this area and that area, and whether military the large vessels can go or not। इसीलिए अगर वाटर से रिलेटेड जो डेटा है वो कलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री पर्पस, है ना। So that is what the country has an expansive oceanographic research program in which scientific research research and particularly Xi'an classes of oceanographic research and all। मतलब ये बता रहे हैं कि perhaps they are actually going towards the China, maybe inviting China in these regions and all। तो उससे क्या हो जाएगा, it is if China is coming in this region then it is not a good news for India। Why? Because देखो मालदीव से पास में अगर मान लीजिए चाइनीज शिप यहाँ पर आती है, इस रीजन में आती है, हो सकता है कोई मिलिट्री शिप भी आए, so of course it's very near, I mean India is very near to that, and that will be a not good thing for us, है ना। So these are the things being talked about। Indian observers point out that the China's ocean survey plan play an important role in enhancing China's anti-submarine warfare capabilities and all। The mapping of ocean's temperature profile and study of other oceanographic phenomena such as currents and eddies they contain is meant to improve sonar परफॉर्मेंस एंड ऑल। तो देखो अब वाटर में क्या क्या चीज रिसर्च किया जा सकता है, जो हाइड्रोग्राफिक डेटा होता है उसमें क्या होता है, ओशन का टेम्परेचर कहाँ पे कितना है, कहां पर ओशन करेंट्स आते हैं, कहां पर नहीं आते हैं, कहां पर सबमरीन्स जा सकती है आराम से, कहां पर सबमरीन्स नहीं जा सकती। सो दीज आर द डेटा दैट आर कलेक्टेड which is very important from even strategic point of view as well, है ना। So these are the things being talked about। For its part, the Maldives has apprehension about India's hydrographic activity being a form of intelligence collection। तो मालदीव्स का apprehension था, नहीं afraid था, नहीं fear था that if India is collecting this then it is not good for them and all। पर यही सब चीजें। Okay,
इसमें इतना डिटेल नहीं जाना, एक दो चीज आपको पता होनी चाहिए, ये पता होनी चाहिए, प्लीज रीड अबाउट इट, यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज साइंड इन 1982, प्लीज गो एंड रीड इट. एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ zones, demarcated in under UN clause, प्लीज गो एंड रीड इट, है ना. जैसे उसमें होता है कंटीजियस जोन, टेरिटोरियल जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, सो प्लीज रीड अबाउट यूएन क्लॉज 1992. ठीक है. The Indian Navy has rendered hydrographic assistance to Mauritius since 1990s, charting the vast Mauritian EEZ and helping build capacity and all. ठीक है. ठीक है. The next is growth signals. Indirect tax might be a bonanza despite some momentum loss. तो GST collection की बात हो रही है. देखो ये नंबर नहीं याद रखना है, because every month, every 2 months, 3 months a new GST collection numbers comes. तो हर बार आप थोड़ी याद रखोगे GST का कितना कलेक्शन हुआ. लेकिन GST से रिलेटेड चीजें पता होनी चाहिए. फर्स्ट, it is First Amendment Act. Second, it is an indirect tax. Okay, now there is a homework. Go and read it. What is the difference between direct and indirect tax? It's a homework for you. ठीक है, आप जाके पढ़िए. Okay, इसमें परसेंटेज नहीं याद रखना because it keeps on changing time to time. ठीक है. फिर ओपिनियन में एक था, राजभवन needs radical reform. राजभवन मतलब गवर्नर हाउस. ठीक है. So he is actually quoting an example from Kerala actually, where a governor was in the news for wrong reason according to the lawyer. ठीक है. So इन्होंने कहा कि he termed the activist of Student Federation of India criminals and accused the CM of sponsoring and all. अब इतना डिटेल नहीं जाना because there have been some issues regarding the governor and chief minister tussle and all. We had discussed it in the past as well. ठीक है. Then he is quoting this judgment of Supreme Court talking about constitutional morality. अच्छा, after the class is over, read about this. Constitutional morality क्या होता है, ये homework है, find out करना. So this is actually, it comes in the news again and again. What is constitutional morality? इसको पढ़ना जाके. ठीक है. Then Article 361 जो है provides immunity. तो आपको पता होगा there cannot be any criminal case against governor and president. गवर्नर और प्रेसिडेंट के खिलाफ कोई क्रिमिनल केस नहीं किया सकता है when the person is in the office. ठीक है. And this is provided under Article 361. उसको हम लोग immunity कहते हैं. So this is also being talked about it, है ना. एक और आर्टिकल है, वेस्ट एशियन नेशंस होल्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडियंस इन जेल अब्रॉड. मतलब अगर इंडियंस अगर बाहर में कहीं जेल में, तो सबसे ज्यादा वेस्ट एशिया में. वेस्ट एशिया कहां पे? दिस इज इंडिया, दिस रीजन इज वेस्ट एशिया. दिस इज सऊदी अरब, यमन, ओमान, इराक. दीज आर कॉल्ड एज वेस्ट एशियन कंट्रीज. तो आप देख सकते हो सऊदी अरब में 2200 लोग जेल में इंडिया के. फिर यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये वाला यूएई, दीज आर यूएई, है ना. देन नेपाल में 1227, कतर में 752, 410 कुवैत में. सो दीज आर द नंबर्स दे आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है. सबसे ज्यादा कहां से जेल में? तो पंजाब से 156, 142 वेस्ट बंगाल, 122 तमिलनाडु. दीज आर द थिंग्स बीइंग टॉक्ड अबाउट. ठीक है. ट्रकर्स स्ट्राइक सेट ऑफ पैनिक बाइंग ऑफ फ्यूल इन सेवरल स्टेट्स. ठीक है. अब इसको भी आप फॉलो करते रहना, बिकॉज देयर हैव बीन सम न्यूज़ की हो सकता है लोग विड्रॉ भी कर लें और सो दीज आर द थिंग्स, है ना. नाउ हियर एक्चुअली इट्स अ बालासोर एक्सीडेंट से रिलेटेड. आपको पता होगा, स्पेल आउट डिटेल्स ऑफ स्टेप्स टेकन टू प्रिवेंट ट्रेन मिसहैप्स. मिसहैप्स मींस एक्सीडेंट. The Supreme Court has said to the central government that please tell us the steps that have been taken to ensure that there should be less accident in the future. ठीक है. अब बताओ कि आपने क्या क्या स्टेप्स लिया है ये इंश्योर करने के लिए कि रेल हादसा कम से कम हो, है ना. फिर इसमें एक कवच सिस्टम की बात कही गई है ना. वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट अबाउट कवच सिस्टम रिगार्डिंग रेलवेज एंड ऑल. ठीक है. So this is all about today's class. Please subscribe to our channel, follow us on Instagram, Facebook, Telegram, and download the BYJU'S exam prep app. Okay, so we'll be having a session from Monday to Thursday, 11 a.m. in the morning. Okay, so thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day. And please press the like button, share this video, and subscribe to our channel.